Good evening, friends. This video on one of the important and laudable judgment coming from Orissa High Court in the case of Bright Star Plastic Industries, wherein so-called notice was issued to the petitioner for cancellation of his registration, and ground was that he has taken his registration on the basis of fraud, willful misstatement, or suppression of facts. He has replied, but still his registration was cancelled, and even his application for revocation of cancelled registration was not considered. Hence, this writ petition. Petitioner has argued before Honorable Orissa High Court. He said there is no provision under Section 16 of Orissa GST Act and Rule 21 of Orissa GST Rules 2017 that registration of petitioner purchasing dealer can be cancelled on the basis of fraud committed by the selling dealer. Very important. Petitioner has argued, उसने कहा कि आप मेरा registration, purchasing dealer is saying आप मेरा registration इसलिए कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि सेलिंग डीलर ने कोई फ्रॉड किया हुआ है. दूसरा आर्गुमेंट लिया गया और जो पिटिशनर ने कहा, एंड ही हैज आर्ग्यूड दैट व्हेन he has executed and purchased the transaction executed by purchasing dealer and selling dealer in the month of April and August 2018, उस टाइम तक दोनों एक्टिव नंबर थे. And purchasing dealer has contended that there is no way I would have known at future date the selling dealer going to cancel his registration number. That is the point raised, and he contended when GST registration of selling dealer was cancelled, it was October 1, 2019. और ट्रांजेक्शन कब हुआ था? अप्रैल एंड अगस्त 2018. उसने कहा मुझे नहीं मालूम था. जब ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हुआ उस डेट में हम एक्टिव थे, दोनों एक्टिव थे, और मुझे नहीं मालूम था कि सेलिंग डीलर अपना रजिस्ट्रेशन फ्यूचर में जाके, क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ अक्टूबर 1, 2019 को, वो अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा लेगा या उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा. मुझे नहीं मालूम था. सो पिटिशनर ने दो आर्गुमेंट लिए. देयर इज नो प्रोविजन अंडर सेक्शन 16 ऑफ ओडिशा जीएसटी एक्ट एंड रूल 21 ऑफ ओडिशा जीएसटी रूल्स दैट बिकॉज ऑफ फ्रॉड कमिटेड बाय द सेलिंग डीलर आप परचेजिंग डीलर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे. दूसरा, जिस वक्त ट्रांजैक्शन हुआ अप्रैल एंड अगस्त 2018 में, दोनों एक्टिव नंबर थे. एंड पिटिशनर हैज कंटेंडेड, परचेजिंग डीलर हैज कंटेंडेड, इन नो वे I would have known that selling dealer is going to cancel his registration at a future date. मुझे नहीं मालूम था. जिस वक्त हमने ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किया, मुझे नहीं मालूम था कि सेलिंग डीलर अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा लेगा. डिपार्टमेंट, रेस्पोंडेंट ने क्या आर्ग्यू किया? रेस्पोंडेंट ने कहा वी हैव डन द वेरिफिकेशन ऑन जुलाई 1, 2019 and we have come across that the premises for which registration was taken, there was no selling dealer. He was not there. It is being occupied by some other person. जिस premises के लिए selling dealer ने registration लिया था, वहां पे वो था ही नहीं.
and that premises was occupied by some other person. Hence, transaction executed between selling dealer and purchasing dealer is a fake transaction. अब हमने दोनों के आर्गुमेंट सुन लिए, हमने परचेजिंग डीलर के भी सुन लिए और सेलिंग डीलर के भी सुन लिए. Depending on the facts and evidence produced before the Honorable Orissa High Court, and quite obvious, arguments are very good, and this need to be proven in the court of law. Purchasing dealer's registration cannot be cancelled because fraud committed by the selling dealer. किस provision में है? And they have cited that section 16 of Odisha GST Act and rule 21 of Odisha GST rules, उसमें कोई ऐसा provision नहीं है. Second, उन्होंने कहा जिस वक्त ट्रांजेक्शन हुआ अप्रैल and August 2018, registration of purchasing dealer and selling dealer was active, and purchasing dealer cannot imagine, and there is no way he can imagine a situation that selling dealer is going to get his registration cancelled at a future date. His registration was cancelled on October 1, 2019. An investigation was done on July 1, 2019, where transaction was executed in April and August 2018. He rightly said so. मुझे नहीं मालूम था कि सेलिंग डीलर अपना रजिस्ट्रेशन फ्यूचर डेट में जाके कैंसिल करा देगा या उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा. सो डिपार्टमेंट कैन नॉट टेक ए प्ली कि सेलिंग डीलर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड हो गया क्योंकि जिस प्रेमाइसेस के लिए उसने रजिस्ट्रेशन लिया था वहां पे वो नहीं था, एंड दैट प्रेमाइसेस इज ऑक्युपाइड बाय सम अदर पर्सन. सो दैट मे बी फेक ऑन द पार्ट ऑफ सेलिंग डीलर, but transaction cannot be alleged as a fake transaction unless it is being proven that they are having connivance. And rightly so, on the basis of fact and evidence, this order of cancellation of registration of purchasing dealer, petitioner, in this case, is being rejected. That's what Honorable Odisha High Court has said, that on the basis of any fraud committed by selling dealer, you cannot cancel the registration of a purchasing dealer. Good judgment, lot of things. हमने देखा है GST में lot of things happening on those point कि selling dealer ने fraud किया, आप purchasing dealer की ITC block कर देते हैं, purchasing dealer की ITC को ineligible या fraudulent कह रहे हैं, या उसका भी रजिस्ट्रेशन आप इसलिए कैंसिल करना चाहते हैं क्योंकि सेलिंग डीलर ने फ्रॉड किया है. सो गुड जजमेंट, एंड डिपार्टमेंट हैज टू प्रूफ जिस दिन मैंने ट्रांजैक्शन किया उस दिन दोनों एक्टिव नंबर थे, और मुझे नहीं मालूम कि सेलिंग डीलर फ्यूचर में जाके अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा लेगा या उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड हो जाएगा बिकॉज ऑफ हिज नॉन कॉम्प्लायंसेस. Hence, any transaction executed prior to that cannot be termed as a fake transaction. Good, laudable judgment from Orissa High Court in the case of Bright Star Plastic Industries. Stay tuned. Thanks for watching. Thank you very much.